Who else is coming? Okay, we're ready now. We're live. We're going to be joined by Aditya Raj Kaul and Ratan Sharda ji very shortly. And I've, of course, starting off with Rajiv Tuli ji on what promises to be a very interesting discussion. A few days ago, we spoke about the impact that the Kashmir Files films has had on the audience in general, of course, on the Kashmiri Pandit community. That goes without saying, because for so long, for over 32 years, they've been waiting for someone to tell their whole truth in this way. And finally, that's happened. So they're, of course, incredibly moved. But what has also been kind of revealing has been how the general public, the general audience, has taken the small film and really, supported it all the way past big movies. And it's a phenomena in that sense that one rarely sees in Hindi films. You just had an Akshay Kumar film release, who is one of the reigning superstars of the Indian film industry, and his film took a hit because of the Kashmir Files. And no one could have anticipated that, because these dates that are picked for premiering movies, being from the industry, I can tell you this, they're picked after a lot of careful consideration, after checking what other films are going to be released. It's a calculated risk. And usually the superstars have the movie dates blocked for their separate films, depending on the festival, if it's Diwali, Holi, Eid. And it's hard to get a release date and, match it to get just the right amount of eyeballs and to make sure that you decimate the competition in the theaters. Kashmir Files has actually kind of taken over in such a way that even a big superstar's big budget film has been hit by it. So I think it's incredible what this movie is doing right now. And I just felt that maybe we should talk about how this is going to impact the film industry, the narrative shifting, which is going on, because very often it was felt that there's certain stories that are not told, or that you are discouraged from telling. And what Kashmir Files has definitely done, and what Vivek has done, has really opened the door to telling stories that otherwise would not be told. So Rajiv Taliji, you of course organize literature festivals. You're very actively involved with even film festivals. What is your take on this response that the Kashmir Files is seeing? नमस्कार अद्वैता जी, अभी कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, और उस वीडियो में किसान आंदोलन से जुड़े बहुत सारे लोग थे. Not to mention the names, but they were there, and they were saying, the anchor asked them कि भाई ये जो चुनाव हुआ इसमें किसान आंदोलन का तो कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा. तो one of the participant said it very well. He said कि हमने एक पिच तैयार की थी, अब उस पिच पर कोई ठीक से खेला नहीं, खेलता तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते थे. तो सेम इज दैट बहुत सालों से, प्रोबेबली 2012, 13, 14 और उससे भी पहले से शायद एक ग्राउंड तैयार हो रहा था, एक बेस तैयार हो रहा था. देश में ऐसा एक वर्ग था जिसको लग रहा था कि बहुत हो गया, अब कुछ मतलब शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने किसी निर्णय में किसी एक बड़े वकील को कहा ऑब्जर्वेशन में कि आपके आसपास की दुनिया इतनी नेगेटिव नहीं है, आप थोड़ा पॉजिटिव होकर के देखिए. तो एक ऐसा माहौल बहुत नेगेटिविटी का 2009 से लेके 13-14 तक बन रहा था. उसमें हैदर जैसी फिल्में आ रही थी जिसमें मार्कंड सूर्य मंदिर को जो है वो शैतान का घर दिखाया गया. उसमें शिकारा जैसी फिल्म आई जिसमें ये बताया गया कि नहीं, वहाँ कश्मीरियत नाम की, या ऐसी और भी बहुत सारी
फिल्म्स उस समय में आई, जिसमें फिल्म्स आई, कुछ पुस्तकें आई, किताबें आई, जिसमें किसी एक पर्टिकुलर इशू पर अ, जो है वो जमीन की जो हकीकत थी, जो फैक्ट्स थे, उसको कवर अप करके एक नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हुई। तो अ, लोगों ने देखी, वो फिल्में भी देखी, और जब ये 2014 में 13 के आखिर में माहौल बनना शुरू हुआ और 14 में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो कुछ फिल्म्स जो है वो कुछ डायरेक्टर्स ने कोशिश की कि कुछ फिल्म्स ऐसी बनाई जाए जिसमें, आपको ध्यान होगा, पूरी जो फिल्म आई थी उस समय में लोग प्रूफ मांग रहे थे कि भाई ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है नहीं हुआ है, उसके उसके प्रूफ जी दीजिए। जी फिल्म आई, फिल्म के बाद एक बड़े वर्ग को विश्वास था, क्योंकि सरकार पर विश्वास है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा है भारत में, विश्वास, सरकार को विश्वास था, सरकार पर विश्वास था लोगों को, इस कारण से जनता तो मानती थी। ऐसे ही ये कश्मीर वाले बहुत सारे जो फैक्ट्स इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है, प्रोबेबली वो जनता का एक वर्ग है जिसने 1947 का विभाजन देखा है, जिसने, नंबर कम हो सकता है, इनका नंबर कम होगा, और जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा भोगा है, जिन्होंने जाकर के कम्युनिटी सेंटर्स में या जम्मू में, जहां पर ये कश्मीरियों को, हिंदुओं को जो कश्मीर से पलायन करके आए थे, बहुत कम लोग थे, तो कुछ लोगों ने देखा है उसको। मुझे ध्यान है कि 87 88। राजीव जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि ये जो बौखलाहट जो हुई है, जो दूसरी तरफ से रिव्यू पे रिव्यू आ रहे हैं जहां टोटली डिबंक करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर डेड बॉडीज गिने जा रहे हैं कि नहीं जी 30 लोग मरे थे, नहीं 50 लोग मरे थे, नहीं 60 लोग मरे थे, जो 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 मुझे तो अश्लील लगता है कि आप लोगों की जिंदगियों के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनकी ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे हैं, आप ऐसी गिनती बैठ के कैसे कर सकते हैं। चलिए इन्होंने ये तो किया, गिनती कर रहे हैं, पर उसके अलावा ये जो चल रहा है, ये एक अभियान जो चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, ये प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत ज्यादा से ये पिछले 5-6 दिनों, अब तो 10 दिन हो गए, कि ये कंसर्टेड एफर्ट चल रहा है कि इसको नकारा जाए, ये फिल्म को नकारा जाए, इसको हेट प्रोपेगेंडा बोलिए, कुछ ना कुछ बोलिए। मेरा नहीं, सवाल ये है। 1947-48 से वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे जम्मू कश्मीर को लेकर के, हम्म जिसमें शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी की दोस्ती, 370 अगर हट जाएगा तो दैट इज द ओनली बाइंडिंग फैक्टर बिटवीन जम्मू कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया। और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहां के कुछ जो पंडित थे वो एलिट थे, जो लोकल मुस्लिम था वो बहुत गरीब था, वो वहां का सताया हुआ था, इस कारण से सारी पावर उनके नाथसीज भी हाथ में तो यही थी। कहते थे, तो ये नाथसीज भी तो जूस के साथ के जी, बारे में यही कहते थे कि ये लोग एलीट हैं, ये लोग सब, इनके हाथों में सब कारोबार है, पैसे हैं। इट वाज द सेम सॉर्ट ऑफ नैरेटिव नो, इट वाज प्रायर टू सेम हिटलर। सॉर्ट ऑफ नैरेटिव व्हिच वाज बिल्ट, और 70 साल में बहुत मेहनत करके जम्मू कश्मीर से लेकर के और जेएनयू और जाधवपुर तक जाते हुए इन्होंने ये नैरेटिव बिल्ड किया था। और देखिए, झूठ के पैर नहीं होते, वो फिल्म में भी एक डायलॉग है, जब तक सच जूते पहनता है, झूठ पूरे विश्व का चक्कर लगा करके वापस आ जाता है। तो वो और पूरा एक इकोसिस्टम था जो इसको प्रमोट करता था। मुझे याद है, दैट वाज द प्रोबेबली फर्स्ट टाइम व्हेन आई पर्सनली मेट आदित्य राज कौल। यासीन मलिक को यहाँ दिल्ली में एलटीजी है, लिटिल थिएटर ग्रुप का एक ऑडिटोरियम है इन द हार्ट ऑफ द सिटी, कमानी क्लॉट जो प्लेस में। हम्म, हाँ, कमानी की बात कर रहे हैं आप? कमानी के साथ में उसके एलटीजी है। बगल वाला, हाँ, हाँ हाँ उसके हाँ हाँ। बगल में एलटीजी में दल खालसा और यासीन मलिक और नॉर्थ ईस्ट के एक दो स्प्लिंटर ग्रुप्स के लोगों को वहां पर बुला करके, प्रोबेबली 2013 की बात है, वो वहां बुला करके उनका प्रोग्राम हो रहा था। ये जो यासीन मलिक थे, उनके आगे और पीछे, और SAR गिलानी, इनके आगे पीछे पुलिस की जिप्सीज चल रही थी जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी, जो उनको प्रोटेक्शन दे रही थी। तो वो हम्म। प्रोग्राम यहाँ हो रहा था दिल्ली में। पर आप एक चीज और मुझे बताइए एक नैरेटिव राजीव घड़ा जी। था, एक नैरेटिव बिल्ड किया था
वो एक फिल्म ने आकर के वो तो पूरा झूठ का इतना बड़ा एक मंदिर खड़ा किया हुआ था, एक झूठ का इतना बड़ा एक वो चर्च उन्होंने खड़ा किया हुआ था, वो एक फिल्म से भरभरा करके गिर गया। मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपने इतनी मेहनत की, इतना पैसा, इतना इतना इंटेलेक्ट आपने उसमें इन्वेस्ट किया, आपने यूनिवर्सिटीज उस नफरत पे, यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चों को वो नफरत एकदम आपने वो उनको उनको ट्रांसफर की, और वो एक फिल्म से एकदम से, तो इसका मतलब जो मैं पहले बात कह रहा था कि एक जमीन तैयार थी। मतलब लोग सच सुनना चाहते हैं, लोगों को सच सुनने के लिए चाहिए, सच देखने के लिए चाहिए। लोग सच देखना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे, परंतु मगर कोई भी तो फिल्म देखिए सॉफ्ट पावर के रूप में यूएस ने हॉलीवुड को सॉफ्ट पावर के उसमें यूज किया है। यहाँ पर भी हमने बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी फिल्में जो है वो विदेश में जाकर के, और बहुत बड़ा रोल है। तो वो अभी तक जो था वो एक बिल्कुल नेगेटिव पर्सपेक्टिव में भारत के फिल्मों में, देखिए हमने फिल्म फेस्टिवल शुरू किया आज शायद 8 साल हो गए, तो उसमें यही था कि भारतीय फिल्मों में भारतीयता और भारतीयता के कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो फिल्म फेस्टिवल हमने शुरू किया। अभी इसी महीने 23, 24, 25 को वो फिल्म फेस्टिवल इस बार भोपाल में है, तो उसी भारतीय उसी के चित्र लिए शुरू। साधना, आप भारतीय चित्र साधना की बात जी, कर रहे भारतीय चित्र साधना, तो वो उसके लिए जमीन तैयार थी। आप फिल्म में, इस फिल्म में भी आप 25 फॉल्ट निकाल सकते हैं कि इतने नहीं मरे थे, उतने मरे थे, इतने नहीं गए थे, उतने गए थे, उसमें किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तीसरी पॉलिटिकल, आप वो सब तो, मगर कोई भी जो है वो एब्सोल्युटली डिनायल मोड में नहीं है कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ जी, ये तो बस एक आउट नहीं ऑफ नहीं, द फिक्शन दैट हैज बीन मेड। वो राजीव जी, वो तो बात समझ गए, पर मुझे ये समझना है कि ये झुटलाने की आवश्यकता क्यों है, और ये क्यों किया जा रहा है, जब सत्य, जब जब लोग जीवित हैं, जिन्होंने आंखों देखा है। तो ये नहीं कि क्या सेकंड हैंड सॉस है या थर्ड हैंड सॉस है, वो लोग अपनी कहानी बता रहे हैं जिनके साथ ये हुआ है, और फिर भी आप झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो आपने यासिन मलिक और गिलानी को जो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट जो मिलता था दिल्ली में जब भी वो राजधानी आते थे, तो एक बात तो है जी, नेहरू की दोस्ती थी शेख अब्दुल्ला के साथ, और राजीव गांधी की दोस्ती थी फारूक अब्दुल्ला के साथ। ठीक है, वो तो है। पर हाल ही में जो आप 2013 की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अबाउट 8 years ago। उस समय क्यों इतनी अपीजमेंट चल रही थी इन लोगों की? देखिए ऐसा है कि अ, जो सरकारें रही इससे पहले, उन्होंने कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर का जो सेपरेटिस्ट मुसलमान था, या जम्मू कश्मीर का जो सेपरेटिज्म का या भारत से अलग होने की एक जो, उसको भारत के बाकी मुसलमानों के साथ जोड़ करके देखा। उन्होंने उनको भारत के बाकी मुसलमान, उनको ऐसा लगता था कि अगर जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हम अगर एक अलग स्टैंड लेंगे तो शायद बाकी भारत का भी जो मुसलमान है वो नाराज होगा। इंटरनेशनल प्रेशर यूएन में, क्योंकि नेहरू जी ले गए थे जम्मू कश्मीर का मुद्दा जब 1948 में कबाइलियों ने वहां पर हमला किया था, एंटर किए थे, उसके बाद वो सारा मुद्दा उठा करके उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया। तो उनको ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को यदि कहीं नाराज कर दिया, उसके कारण से बाकी भारत के भी जो मुसलमान हैं, वो जो उस समय तक एक बड़ा वोट बैंक आज भी है, वो वोट बैंक तो है ही है, तो कांग्रेस या इन सब विचारधाराओं के साथ अधिक मिलकर के काम को अधिक वोट किया करते थे। उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि ये ना हो कि ये होने के कारण से, उनकी नाराजगी के कारण से इंटरनेशनली रेप्रिकॉशंस आए, और जो यहाँ का लोकल मुसलमान है वो भी कहीं ना कहीं, बाकी भारत का जो मुसलमान है वो भी अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करके कहीं, देखिए आज भी कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग नेताओं का ऐसा, नेतृत्व का ऐसा है जो पाकिस्तान के भी बहुत ज्यादा खिलाफ बोलने, और एक नेता ने तो वहां जाकर भी बोला इस सत्ता को हटाने में हमारी मदद कीजिए। वो पाकिस्तान के मुसलमान और भारतीय मुसलमानों को जोड़ करके देखता है। उनको लगता है कि कहीं उनके खिलाफ या जम्मू कश्मीर के मुसलमान के खिलाफ कुछ ऐसा हमने सोचा, किया, बोला, तो भारत का बाकी मुसलमान जो है वो भी नाराज हो जाएगा। मगर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कहीं भी कोई स्थिति है। जो भी पिछले
40, 50, 60 साल में व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली या जैसे भी देखिए, कुछ तो टूरिज्म के लिए हिंदू वहां जाता ही जाता है, परंतु वो जो बाकी पर्यटन के लिए कुछ धार्मिक पर्यटन के लिए हिंदू जाता ही है, वहां वैष्णो देवी है, अमरनाथ की यात्रा है, वो सब चीजें हैं। मगर बाकी बाकी मतलब देश के बाकी नागरिक भी वहां टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो वो जब वहां पर जाकर के देखते हैं, वहां जाकर के जब उनको समझ में आता है, शोरूम के ऊपर एक लिखा है इंडो कश्मीर आर्ट सिम्पोरियम, या ऐसे कुछ भी चीजें वहां लिखी हुई दिखती हैं, और वहां के जब आम नागरिक से भी कई बार बात करने का प्रयास करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये इंडो और कश्मीर अलग अलग है, इसलिए इंडो कश्मीर है। तो ये कोई भी एक साधारण नागरिक जो भारत से इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन जो वहां जाता है, उसको ये महसूस होता था। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था कहीं बीच में, मुझे लगता है कि, और उसी के कारण से जो पिछली सरकारें थी या बाकी सब था, उन्होंने एक ये फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने की और उसको सस्टेन भी रखा इतने लंबे समय तक। ये नहीं है कि राजीव वो जी, 1 आध 2 साल में कोई एक मुद्दा आया समाप्त हो गया, एक लंबे समय तक उसको सस्टेन रखा उन्होंने, उसमें बहुत टाइम, एनर्जी और राजीव जी, पैसा लगाया उसको चलाने में। राजीव जी, नो मैं एक अपने मुसलमान जो फ्रेंड है उनसे बात कर रही थी, और काफी साल हो गए इस बात को। तो बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये सब जब पॉलिटिकली गर्म है, ये सब नहीं था, तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने से ये कश्मीर का जो सिचुएशन है और ये पंडितों के साथ जो हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत बुरा हुआ है। तो मैंने फिर पूछा, मेरी तो कैंडिड कॉन्वर्सेशंस होती हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे आप लोग पैलेस्टाइन के लिए बोलते हैं ये सब, ऐसा कश्मीर के लिए ज्यादा नहीं सुनाई देता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, वो लोग हमसे अलग रहना चाहते हैं, हमारी जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल दिया मुझे कि हमारी शादियां भी नहीं होती, वो लोग उनकी लड़कियों को हमारे साथ शादी में भी नहीं देते। तो देर इज नो काइंड ऑफ इंटरमिंगलिंग इन दैट डीपर सेंस with that the community. So ये जो political जो wisdom था, या आप बोल दें स्टुपिडिटी, कि अगर यहाँ पे हम कुछ करेंगे तो बाकी भारत के मुसलमानों के साथ क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये अलगाववाद की सोच ही थी ना, अलगाववाद की, सॉरी, नहीं, अलगाववाद की सोच ही थी। बिल्कुल ठीक कह रही है आप, बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बिल्कुल अलगाववाद की सोच ही थी, जिसके कारण से ये देखिए, वहां का जो एक कश्मीर में रहने वाला, या कश्मीर का जो एक कश्मीर के जो एक नागरिक जिनको इतने साल तक फीड किया, उसके भी अपने कारण हैं, किस प्रकार वहाँ मदरसों की, मस्जिदों की, इन सब की, और वो सब वहाँ उनका क्या रोल है इस सारे में, उसका भी अपना एक कारण है ये सब। परंतु वो बात बिल्कुल ठीक है कि उनको एक अलग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियर एक वो दे करके उनका वहाँ उनको बना करके रखा गया, और उसके कारण से वो जितने भी जो वो पूरा एक बड़ा समाज है, उस समाज को बाकी देश से भी काट कर रखा गया। वो जब वहां से यहाँ आते थे, या यहाँ के लोग जब वहां जाते थे, तो वो एक भाव किसी को भी, एनीबडी कैन फील इट, आई मीन जो भी वहां जाएगा। और आपने जिससे बात की, मेरी भी ऐसे कई लोगों से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि भाई वहां जब हम लोग जाते हैं, या वहां का जो मुस्लिम समाज है, वो अपने आप को बाकी भारतीय मुस्लिम समाज से बिल्कुल अलग मानता है। हम्म, वो एक, अच्छा, उसमें हो सकता है कि एक स्टेट सब्जेक्ट वाला भी बड़ा मुद्दा रहा होगा, कि वहां की लड़की यदि बाहर चली जाएगी, बाहर जाके ब्याह कर लेगी, तो उसमें भी क्या कहते हैं, उसमें वो उसको स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, उसकी कश्मीरियत जो है वो खतरे में आ जाएगी। तो एक क्लोज कम्युनिटी पूरी ऐसी एक वो बना रखी है कि विद इन दी कम्युनिटी ही सब कुछ होगा। तो वो उनकी ऑब्जर्वेशन और उनकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। और उसका उसका कारण यही था कि ये जो वहां पर लोकल एजुकेशन सिस्टम था वहां का, और 1947 और उससे पहले जो पाकिस्तान में जाना, पाकिस्तान के साथ रहना, पाकिस्तान को अपना मानना, और इनको भारत के मुसलमानों को, भारतीयों को अपना नहीं मानना, ये सारी जो चीजें थी, ये सब जो था, ये एक वास्तविकता है, ये है ही है ऐसा। और मुझे लगता है कि उसी के कारण से मतलब उसको एक बिल्कुल अलूफ रख के, कट ऑफ रख के उन्होंने प्रयास किया एक बड़ा नैरेटिव। मैं फिर कह रहा हूँ कि वहां के जो 2-3 परिवार हैं,
चाहे वो मुफ्तीज का परिवार होगा या फिर वो अब्दुल्ला का परिवार होगा। यही दो तीन परिवार हैं जो परिवार वहां सब 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 कुछ तय कर रहे थे, सब कुछ चला रहे थे। और एक बड़ा नैरेटिव ये भी खड़ा किया हुआ था कि 370 फैक्ट्री से चली जाएगी तो कोई कॉमन कनेक्ट नहीं बचेगा। वो दो इसी कारण से दो उनका एक उनकी गाड़ियों पे एक कश्मीर का झंडा लगता था, एक भारत का झंडा लगता था। संविधान जो है वो अलग था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिन हालातों में पूरे देश से आंदोलन करके वहां गए और वहां जाकर के इस प्रकार अरेस्ट होने के बाद बिल्कुल उस स्टेज तक उनको इलाज नहीं दिया, तो ये सब भी आंदोलन अलग अलग समय पर देश भर में से अलग अलग समय पर होते रहे हैं। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनको एक अलग से बिल्कुल अलग कम्युनिटी, अलग देश जी और ऐसा एक भाव उनके अंदर भरा गया जिसको वो चलाते रहे लंबे समय। जी 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 बिल्कुल। और आई थिंक वो दैट इज मेकिंग ऑल द डिफरेंस राइट नाउ, क्योंकि और ये भी मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ये अटेम्प्ट था कि आप जो पैलेस्टाइन में हो रहा है इसको कश्मीर को तो इंटरचेंजेबली और कॉमर डाल के कहा जाता था उनके पोस्टर्स वोस्टर्स में कि पैलेस्टाइन हो कश्मीर हो, ऐसा ऐसा करके। तो ये जब ये ऐसी जब नैरेटिव सामने आती है राजीव जी, जहां पे द ओरिजिनल विक्टिम्स इन अ वे उनकी कहानी सामने आती, तो ये थोड़ा ये इंटरनेशनल नैरेटिव भी हिल जाता है। देखिए ऐसा है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सारे नैरेटिव्स हैं वो प्रोबेबली अगर आप किसी एक नैरेटिव को कहीं काउंटर करेंगे और आपने इस वाली प्रॉब्लम को भी कहीं इनिशियली ही कहीं काउंटर कर दिया होता, कभी जब ये नैरेटिव बिल्ड होने की कोशिश कर रहे थे तभी कर दिया होता, तो शायद इतना बड़ा दुख जिनका नैरेटिव अभी बस हुआ है उनको भी नहीं होता, उन्होंने कुछ और नैरेटिव ढूंढे खड़े किए होते, कुछ और ढूंढा होता। तो ये तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर बेसिक चीज क्या है कि आपको अ, अपने इश्यूज को कितना इंटरनेशनलाइज करवाना, ये भी तो एक पर्टिकुलर कंट्री को ही तय करना पड़ेगा ना। आप कैसे अपना काउंटर कहीं पर भी किसी भी लेवल पे, मुझे नहीं लगता। देखिए जैसे पाकिस्तान ने बहुत कंसर्टेड एफर्ट किया कि ये जो जम्मू कश्मीर वाला इशू है ये डिस्प्यूटेड ही रहे, जबकि जो असेशन हुआ है, जो असेशन का डॉक्यूमेंट साइन हुआ है वो फाइनल है और अनकंडीशनल है। उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई सिर्फ बाद में धारा 370 नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला के बीच का एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करके उसमें डाला गया, नहीं तो ये सारा जो इशू था ये इशू तो सेटल्ड है हमारे पर्सपेक्टिव से, भारत के पर्सपेक्टिव से तो ये सेटल्ड ही माना जाना चाहिए था, क्योंकि जो असेशन डॉक्यूमेंट है वो फाइनल है और उसमें वो अनकंडीशनल है, उस पर लिखा गया है, उसमें ये है कि दिस इज नाउ अ सेटल्ड फैक्ट। और 370 जो है वो दैट विल बी एडेड, दैट इज एडेड एज एन। तो जब इस पे उस समय प्रश्न हुआ कि 370 क्यों इसमें जोड़ी जा रही है, जब जो सेशन डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल इसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो नेहरू जी का कहना था जो लोगों की भावना है वो लोगों की भावना वहां की ऐसी है कि उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो और लोगों की भावना ही लोकतंत्र में मायने रखती है, कोई कागज, कोई संविधान, कोई कानून मायने नहीं रखता है। तो आपका जब अपना एटीट्यूड, और नेहरू नेहरू जी को उस समय शायद पता नहीं कुछ नोबल और बाकी सब चीजों के लिए कुछ उनका रहा होगा, तो नोबल प्राइज वगैरह, नोबल पीस प्राइज, और अपने आप को स्टेट्समैन इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा स्टेट्समैन एस्टेब्लिश करने का वो सब उनका रहा होगा, इस कारण से होगा वो। परंतु कुल मिलाकर के ये सारे जो इंटरनेशनल नेशनल नैरेटिव्स अभी तक जम्मू कश्मीर को लेकर के बनाए थे वो इतने ज्यादा इतनी इतनी ज्यादा झूठ की उस पर नींव पर खड़े थे कि एक फिल्म ने उसमें इतनी उस नैरेटिव बिल्ट करने वाले इंटेलेक्चुअल्स में, उस नैरेटिव को मानने वाले एक वर्ग की जी उन्होंने एक ऐसी वो हालत कर दी है कि उनसे ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा जी जी। और रतन शारदा जी भी हमारे साथ जुड़ जुड़ गए हैं। नमस्कार रतन शारदा जी, बहुत समय बाद आप द संडे क्लब पे में शामिल हुए हैं, सो वेलकम बैक। और धन्यवाद जी, धन्यवाद फिर याद करने के लिए। हमारे चैट में ऑलरेडी चर्चा छिड़ गई है कि भाजपा क्या करती है, संघ क्या करता है, कुछ किया नहीं किया।
तो मुझे लगता है कि जो ये अभी राजीव तुली जी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जो ग्राउंड वर्क जो होता है, जो माहौल जो बनाना होता है कि ऐसी फिल्म आए, सिनेमा घरों में आए पहले तो, और फिर उसको सराहाया जाए और इतना सपोर्ट मिले, तो ये जो ग्राउंड वर्क होता है, ये जो माहौल बनाते हैं कि बनाया जाता है एक्चुअली टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इसमें संघ की भूमिका क्या रही है? और मुझे तो पता है कि काफी काफी दशकों से लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, और उस समय तो भारत के विभाजन के समय गुरुजी खुद गए थे, और हरि सिंह जी जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उनसे उनकी बातचीत हुई थी, और उसके बाद दैट लेटर वाज आल्सो साइंड। तो हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, तो उस पे आप थोड़ा हमें बताइए। अद्वैता जी, इनफैक्ट राजीव तुली जी के पीछे किताब उन्होंने रखी थी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द आरएसएस वे। उसके अंदर 3 चैप्टर हैं, 3 बुक्स हैं। एक में एक है जम्मू कश्मीर के ऊपर, एक है पंजाब के ऊपर, एक है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। तो जो आरएसएस की भूमिका हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के परे जाती ही नहीं, कम्युनलिज्म और फाशिज्म के वाद विवाद में घिरी रहती है, इस पुस्तक के अंदर मैंने ये विषयों के ऊपर संघ ने क्या काम किया, इन कॉन्फ्लिक्ट के विषयों पे, इंसर्जेंसी के विषय में, इसके ऊपर मैंने संघ के रेजोल्यूशन, उसके आसपास के तथ्य जो कि मैंने संघ के लोगों से नहीं उठाए, बल्कि मैंने आउटसाइड मीडिया, कोई इंडिया टुडे होगा, कोई ईपीडब्ल्यू होगा, इन सबसे सारे विषय उठा के, पुस्तकों से उठाकर आई ट्राई टू फिगर आउट कि संघ ने क्या कहा, लोग उस समय क्या कह रहे थे, और संघ ने कहने के बाद किया क्या। इस प्रकार का विवरण उसके अंदर है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी जब लोग कहते हैं, वास्तव में एक बात मैं कहूँ तो मैंने अभी ये यूट्यूब इसी विषय पे 2 दिन पहले किया, या 3 दिन हुए होंगे। पहले मैं बड़ा रिलक्टेंट था, मैं चाहता नहीं था, मैं चाहता था कि जो कश्मीर फाइल के ऊपर चर्चा चली है वही चर्चा चले, कश्मीरी हिंदुओं के जो विषय है उसी विषय पे चले, क्योंकि वो विषय बहुत बड़ा है, इसके बजाय कि संघ ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अभी लोगों की आदत है कि किसी तरह संघ को घसीटना। पहले विरोधी घेरते थे, अब खुद को संघ से भी अधिक हिंदू मानने वाले लोग घेरते हैं और इस प्रकार के विषय खड़े करते हैं। तो पहले तो ये बताओ कि कश्मीर का विषय आज तो खड़ा नहीं हुआ। कश्मीर का विषय 1931 में खड़ा हो गया था, जब शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी और पहली बार रालीव चालीव गालिब का नारा दिया था, जिस समय कश्मीरी पंडित इस करंट दौरान के अंदर वहां से निकले। उसके बाद 1941 में निकले थे, 1948 में निकले थे। तो उस समय से लेकर संघ के लोग वहां, जब संघ का काम शुरू हुआ, तो दैट इज अराउंड 46। मुझे लग रहा है कि रतन शारदा जी का कनेक्शन थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। कैन यू ऑल हियर मी? अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं तो कुछ कह दीजिए अपने चैट्स में, बिकॉज आई थिंक रतन शारदा जी थोड़ा, हाँ जी, रतन शारदा जी आपकी इंटरनेट में थोड़ी गड़बड़ है। I think there's an issue with Ratan Sharda ji's internet connection. We are not able to hear him, so I'm going to actually just message him and ask him to log back on, because that would be the best. Okay, I think he's logged out. I think he'll come back on. So basically, what we're I'm interested in looking at your chat as well till the time that he comes back. Karan Arora wants to know, ask him why they are not bringing CAA rules. Okay, Miss. Then there is RP. Okay, Deen, they are okay. There's a very vibrant debate going on in our chat, which is fantastic. I'm audible, I know, but Ratanji is frozen. He's unfrozen. He's come back now, and I think he's back with us now. Ratan Sharda ji, can you turn on your video? Yes, I'm back. Haji, great. I don't know why I dropped. Actually, I'm sitting in an outside place in Delhi, so maybe I don't know the Wi-Fi is good enough. So where did I stop? I don't know. I was trying to tell you. Conflict resolution, you said that there have been many things, and you picked it up from EPW also, which I'm impressed, because EPW तो leftist है, तो बिल्कुल उन्होंने भी अगर ट्रैक किया है तो this is saying something.
So I have kept track of nearly every intellectual and politician and the media of that time, what they have said and what they have not said. And I was saying that actually Kashmir problem started not now. Even if I leave behind the old times when the Hindus were converted to Islam of 13th century, etc., I can still talk about 1931, the beginning of Sheikh Abdullah's political career. And at that time, in that particular stage, he created Muslim Conference, and then he first time he gave the slogan of Ralif Chalif Galib. So it's not a new slogan which was raised in 1990. It was raised every time when Kashmiri Hindus were asked to leave Kashmir Valley, and this began once the Kashmiri Hindus were reduced to minority. Then 1947, when the Muslim conference, or it had become national council at that time, they raised Pakistani flags in Kashmir. It was RSS people who raised a tricolor in that particular region. Then 1947 October, when attack from Pakistan came, RSS Swayamsevak stood up with Dogra army. They stood up with the Indian army when Indian army finally landed up. And you talked about Guruji's discussion with Maharaja Hari Singh, which has been now confirmed by many other sources, also independent of RSS. At that time, he was not allowed to complete the accession because Nehru had an enormous animosity with Maharaja Hari Singh, and he had special love for Sheikh Abdullah. And why it happened? Because they believed Sheikh Abdullah is paragon of secularism, who was converted from fanatic Islam to secularism by two communist professors, husband-wife team, who actually sat down in Srinagar to change the image of Sheikh Abdullah. So now onwards, the separatists Who are became these two? secular. Who are these two? Do you recall their names? I think Professor Bali was one, and his European wife. So if you go through my book, you'll find the names. I can't remember offhand. You just I came at short notice. It's there in my book. So these people actually doctored and created a right image for Sheikh Abdullah, for which even Nehru and Gandhi fell. So Nehru came to defend Sheikh Abdullah when he was arrested for treason. When arrested for treason, Nehru was stopped at the border saying, "Please don't come without permit." He was so angry, he said, I'll show you what your place is. And you don't know, you're talking to future Prime Minister of India. So he saw to it that Maharaj was harassed. So Maharaj was asked to leave the valley. He was sent to Bombay of all the places. He died in Mumbai unsung. Yes. His son was the regent Karan Singh. So at the same time, Sheikh Abdullah He was was asked exiled. to. Yes. Yes, and Meherchand Mahajan tells in his book that when he said enough is enough, I'm leaving, I'm going to Pakistan to talk about defending my state. And then Sheikh Abdullah came out of the room saying, nahi, samjhauta kar lo, samjhauta kar lo. So this was the beginning. And that is when RSS people went deep inside Pakistani occupied territory, gave the information to the army and the government. They fought alongside army, collecting armaments when it was dropped from the air, helped in making bridges, roads, and airstrips, etc. And they paid with their life. And I have Swayamsevak, who was there in my book. I have talked about was in Kupwara. He said about 100 families of Hindus who were trying to fight that place. They had petrol bombs, they had various whatever small thing collected, but there were lakhs of Muslims. What seemed to them lakhs of Muslims coming from three sides, and they realized they have lost the fight. And they called the meeting saying RSS people, others who are Mukbis of Hindustan will be killed if they try to sell their idea to this area. So this was in 1947-48. We know about Kotli, Mubarakpur, etc. I will not get into those details. Then Article 370, Praja Parishad was created, which was headed by one of the RSS men, and it created one of the biggest stir in Jammu Kashmir. And that 375 for 370 from that day till was repealed has continuously been fought by RSS. If I go back to 1986, RSS people continuously stood up with the Kashmiri Hindus, used to go to police station, file cases when violence happened, when temples are destroyed, when Justice Tikala Taplu was also Swayamsevak, as you know, who's been talked about much. And when the honorary judge Ganju was killed, terrorists challenged for somebody to take the body. And this was RSS people who went, took the body and gave him honorable cremation. This continuous fight went on. When the exodus happened, when the 19th January, nothing could be done. In Jammu, RSS was the first one to create a relief committee, collect funds for the rehabilitation. And as you know, in education, we talk about how they help the people in education. In Pune, in Maharashtra, there's special seats
We talk about Bal Thackeray, but there was Datta Rane, the education minister at that time. Of course, Balasaheb Thackeray did wonderful job by giving them Abhaydan. But Datta Rane was the education minister from BJP. He saw to it that every college gives admission to the Kashmiri youth. And I was surprised. I had a young engineer in my office, in my business, who wrote to me 3 days back. He stays in Gurgaon now. That Girija Tikku was their sister, and these 13 brothers are still not coming out of trauma that they could not help her, save her. So all these, and he's a Swayamsevak. He still is a Swayamsevak. So RSS people continuously, whatever they could, they started Seva Karya in Jammu Kashmir Valley, even during Exodus time, before that, and even afterwards. Idea was to keep link there, keep working. Jammu Kashmir Study Center came up, and if you remember, 35A was discovery of Jammu Kashmir Study Center, which was a root cause for citizenship bill, which was totally unjust to refugees from Punjab, refugees from the Gorkhas, the women, and also from Safai Karmachari from Punjab. Yeah, so that was also continuously fought against by the RSS people in the different names, whether BJP, RSS, etc. And that Jammu Kashmir Citizens Bill, then 35A, so continuous highlighting of the problem and trying to create an atmosphere, canvassing and projecting that entire episode the way it was. This is what has finally led to change there. Now to expect 70 years of horrible conditions in Jammu Kashmir to be resolved in 7 years and say क्या किया भैया 370 को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था 370 जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था वो गया 35A गया जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन गया जिसके अंदर माइनॉरिटीज के राइट्स की बात ही नहीं थी दे डिड नॉट इवन रिकॉग्नाइज द माइनॉरिटी वो सब करने के बाद आज जब वहां बदलाव आ रहा है तब कहेंगे आरएसएस ने क्या बीजेपी ने क्या किया मुझे लगता है ये शुद्ध बातें हम एक राष्ट्र के अंदर वातावरण बन रहा है अभी जैसे द कश्मीर फाइल है मैं मानता हूं कि जो वातावरण बन रहा था चाहे वो टीवी डिबेट्स थे चाहे राइटिंग्स थी चाहे बुक्स थी चाहे जमीन पे काम था जो वहां के लोगों ने निडर होकर किया उसका जो उबाल आता बॉइलिंग पॉइंट था वो द कश्मीर फाइल है वो जो लोगों के अंदर एक गुस्सा था निराशा थी वो फूटकर इस पिक्चर से बाहर आई है और मुझे नहीं लगता हिंदू समाज दोबारा अपने उस आलस के भाव में उस डिफीटेड एटीट्यूड में दोबारा जाएगा मुझे ऐसा नहीं लगता और उसके अंदर कहना कि किसी ने कुछ नहीं किया मुझे लगता है केवल एक निराशा फैलाने के लिए समाज में बंटवारा लाने के लिए ऐसी बातें की जाती है उसके अंदर हम ना पड़े तो अच्छा है हम देखें कि जिस प्रकार से एक होलोकॉस्ट को पहली बार चित्रित किया गया है उस चित्रित किए जाने वाले होलोकॉस्ट को अगर हम सही मायने में समझें और इसके बारे में गौर करें कि कितने होलोकॉस्ट हो गए कितने जेनोसाइड हो गए और नहीं होने चाहिए नहीं होने देंगे और सब पे फिल्में बने सब पे साहित्य लिखा जाए तो हम देखेंगे कि देश का चित्र बदले जी जी and Aditya Raj Kaul has joined us also. Thanks so much Aditya. Wonderful. For being with us this evening. Aditya, you know, you have been associated with this cause since you were a teenager. In fact, the first time I became aware of you was at an India Today conclave where you questioned Gilani, I think it was, no? On stage. And back in the day, that conclave was a very hallowed space and invites went to very few people. And it took a lot of courage for a 19-year-old to stand up and to question someone sitting on that stage with all the respect and dignity and to be surrounded by people who are all the who's who of the country. So do you want to talk about that a little bit to start off? Well, that was a one-off incident, but there were quite a few other incidents. It was in 2006, Advaita, that we started this Roots in Kashmir. It was basically an advocacy and awareness platform where we spoke and protested all across for people, justice to the people, for Kashmiri Pandit to be in the mainstream narrative. But what happened was that 2006 was another time altogether. Congress was in power. There was a Congress government, and whenever we went to TV channels or editors or newspaper editors, we was said that okay, dekhte hain, karenge kuch, but nobody did anything. So every time we protested, next day it was not in newspapers, it was not in any agencies, it was not on any news channel. So we have seen that time. So this was very rare that Arun Puri allowed me to speak during that India Today conclave. I was invited there by the India Today team. And at the end, when Arif Mohammad Khan, Farooq Abdullah,
and Gilani had spoken, Manoj Joshi was the moderator, and Arun Puri told Manoj Joshi to have one last voice from a Kashmiri Pandit who was sitting in the audience. So that's how I was invited. I spoke, rest is history, what happened at that moment, etc. And later I received a lot of threats also because that video had actually gone viral, and it's even today, it has absolutely got viral. But the same India Today also invited Yasin Malik. And very strangely, we at that moment saw Mr. Anand Mahindra, chairing that session, presiding over that session, and referring to Yasin Malik as someone who is very peaceful and who believes in peace and is a voice of reason and believes in the return of Kashmiri Hindus to Kashmir Valley. So obviously when I tweeted a few days ago, Anand Mahindra had blocked me 10 years back, but he unblocked me. He sent me a message of regret and invited me later. But this is just an example of what the ecosystem was really like. And there's one ecosystem that was functional in Kashmir. There was another in Delhi and elsewhere, where talking about Kashmiri Hindus was a sin. Talking about minorities was a complete sin. If he challenged Yasin Malik, it was another complete sin. I've just tweeted a video an hour back where in 2009 at the Nehru Memorial in Delhi, Ms. Madhu Kishwar, organized an event where Yasin Malik again was invited. And, when me, Sushil Pandit, Lalit Ambardar, Rashnik, and several others questioned, and, in a very democratic fashion, we questioned that, why is it you invite separatists? We are still okay with it. But, when you invite a terrorist, when you invite someone who is confessed to killing people and openly challenging the government of India, the Constitution of India, that is certainly not tolerable. So Madhu Kishwar at that point said in that video, which is visible on Twitter, that "Itne saal aap logon ko chillane se kya mila? I will not." I just saw that. I just saw it 15 minutes back. Yeah. So people were shocked that Madhu Kishwar is, absolutely a supporter of Prime Minister Modi right now. She is perhaps completely turned into a right wing. She was in different color at that particular time. She was very close to Mehbooba Mufti. Mehbooba Mufti and Madhu Kishwar perhaps used to be, traveling together. But anyways, perhaps Madhu Kishwar will explain or apologize. I leave it to her. But this happened. And there were many people, from Arundhati Roys of the world, Sanjay Kaks of the world, who invited. And we made it a point, like 50 of us or 20 of us or 30 of us, that every time a radical separatist or a terrorist is in Delhi and is given a platform, we will reach there. We'll either protest or we'll ask the organizers to give us a platform to counter him. And we reached at each and every location. How did you all get together, Aditya? And it was very strange. It's not just about how we got together. The people that, because we are an educated, community, we are not activists. Yeah. So, there was a person who was vice president of a certain Citibank. There was another person who was, CEO of a Belarusian potash company here. There was another person who was, again, he had his own financial consultancy company. So I remember, 50 of us reaching each and every place and, mocking and, countering Yasin Malik and Gilani and Mirwais. I remember so many times going to India Habitat Center, IIC, being detained by the police. Can you imagine, for protesting? Yasin Malik was given a great stage, garlands, everything, but we were detained by the police at that particular time. And I remember one such protest in 2008 when I was arrested, actually, and I spent 2 days inside the prison, along with 50 of us. And I remember Mr. Dadwal was a police commissioner. And, when some of the, political leaders from different political parties actually called the chief and said that, you should release them. And, they are victims, basically, Kashmiri Pandits. They were just protesting. And Dadwal said that, I completely agree. I've seen their profile. Somebody is head of an MNC. Somebody is a vice president. Somebody is this. But, they have entered for the first time a residence of a union minister and created a havoc there. And this has never happened in independent India. But anyways, so this is just an example of how this ecosystem functioned. And JNU, Jamia, etc. gave them an open platform again, time and again. So Yasin Malik was introduced as this,
a new voice of reason, a new hope, Gandhi glimmer with of a hope gun. for Kashmir. He Yeah, was called Gandhi with a gun. Gandhian and Gandhi with a gun. Arundhati Roy, completely backing him, referring to him as Che Guevara of Kashmir and whatnot. So we have faced that. I have been in confrontation with Yasin Malik so many times, time and again. And so my thing, I'm not going to, say that nothing was done. Nothing, a lot was done for the people in camps to an extent at a humanitarian level. So different political parties, including Bal Thackeray, BJP, RSS, came forward. But my resentment, my question here is for the successive governments. Why did you fail to provide justice to the community? The first question is, if there can be a commission for the 1984 anti-Sikh riot, victims, and it is still ongoing. I mean, the cases are still ongoing. Then why not for people who suffered in 1990? Why shouldn't the truth come out? Very fair. I think that's very fair. Advaita, first let me compliment Aditya and his entire community. They were a traumatized community who had struggled to educate people like Aditya. They were very young at that time when he went through the trauma. I have met Kashmiris who were actually traumatized after seeing the movie, but still to come out while trying to balance their life on the roads, fight with the government, fight with present themselves with various governments and go to police station, etc. That requires real lot of not just courage, I would say, but also what we in Hindi call dharya. That strength of character that you will complete your career, reach or the zenith of a career at young age, despite going to the worst kind of, I would say, deprivations, worst kind of environment which you never saw in your life, and still come out shy, smiling and laughing. One Kashmiri lady who works for JKC, told me, रतन जी हम अच्छे दिखते हैं, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, हंसते रहता, मतलब ये नहीं, हमको पीड़ा नहीं है. So this pain that they carried for so many years, that is hats off to them. And as far as this inquiry commission is concerned, I'm very sure in coming days we'll hear about it. My heart broke when Supreme Court said that this is time bar. Can humanity be time barred? Can genocide be time barred? Can entire community throughout can be time barred? I'm very sure that the nation has awoken, government has awoken. I would see in coming days surely an inquiry for truth and reconciliation. That is the only way to give justice, because those who have suffered, died disappointed with deep agony, they need closure. And young people who are today seeing some change in Kashmir, they also need further more encouragement to go ahead and go back to Kashmir if they want to, and at least get their rights back, get their homes back, get their lands back, which were served by various people. It's not an easy exercise. I'm sure in coming 2-3 years. In fact, when 370 went, I very clearly said it is not going to change in 2-3 months. It's 70 years of muck, 70 years of radicalization. If I don't even go back to pre-independence day, or I don't go to 13th or 14th century. So this radicalization, this sense of isolation, this sense of they being something different, it'll take some time to come out. I'm very sure of that. It will happen. Even today, if you go to Kashmir, you'll find my niece just went there. The people who stay there still have resentment that their 370 privilege was taken away. They still feel that these Indians come there. They still charge them exorbitantly, come on the roads asking for some donation or something, even in police uniform. This will take time, but I'm very sure air has changed. You see young people standing up for India, which was never supposed to happen. And young people joining politics, which was never supposed to happen. So when young people come on stage, I took YouTube interviews with some of the youth of Kashmir, and they were very positive. They were repentant. They wanted everybody to admit that what happened to Kashmir in those wrong. This is the change. Those voices are, Aditya, those voices are not being amplified, right? What we're hearing is even someone like a Yashwant Sinha. I found his tweet in particular very offensive. You're a senior politician. You have been the finance minister, am I right, of the country at one point of time. Foreign minister also. Foreign minister. And you turn around and say, Ghazni or Gauri did this to me in some 15th century. So how can you mock it? No, I'm shocked. In their hate for Narendra Modi, in their absolute hate for Narendra Modi, they are blind. They're completely blind. They do not see reason. They do not have any kind of empathy.
they do not have any kind of logic. That's what I see it as. I responded to Yashwant Sinha and I told him that if your son was killed by Yasin Malik and you were forced out of your house and stayed in a pathetic condition in a camp for 18 years, and then the Prime Minister of that time shakes hand with the killer of your son, will you say the same thing? I don't think so. So, he needs to apply his mind, perhaps. I don't know. I don't want to use the word, but, at this age, I don't know what he's going through. But, my larger question here, Advaita, is about whataboutery. I say this often, that whenever the question of Kashmiri Pandits comes, whenever the question of exodus, ethnic cleansing or genocide, whatever, anyone wants to call it, arises, there's a certain section in Delhi which says that, what about Kashmiri Muslims who were killed all these years? There are some Kashmiri Muslim separatists also who come and who say that ye Kashmiri Muslimano ka kya, hamara kya, hum bhi to mare hain isme. Omar Abdullah said this very recently when he spoke about the film. My question to them is, कि क्या कश्मीरी पंडितों ने कभी बंदूक उठाई? Did we ever, take up the gun? I don't think we did, and that would have been the easiest way out. और क्या आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते थे? हम बिल्कुल कर सकते थे. और इतना गुस्सा था, इतना क्रोध था कि हम बिल्कुल ये कर सकते थे. और मैं, I'll confess today that whenever we countered Yasin Malik in Delhi, there were times that we thought that state is not doing anything. The police and the agencies are not doing anything. In fact, the intelligence bureau is paying money to Yasin Malik. Yes. And perhaps someday they need to probe this. Who was arranging that money for Yasin Malik from the intelligence bureau in Delhi? So we thought that, do we need to pick up the gun and kill Yasin Malik ourselves, bitta karate ourselves, so that the state wakes up? Even though, one or two of us go, in prison for life. So that was the kind of frustration that we suffered. So this whataboutery is not going to work. और मैं आपको बोलूंगा कि हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, हमने किसी कश्मीरी मुसलमान को मारा नहीं पिछले 30 सालों से 32 सालों से. 1990 के आप आंकड़े देखिए, क्या किसी ने बंदूक उठाई? क्या हमने ग्रेनेड किसी कश्मीरी मुसलमान पे मारा और उनको मारा? लेकिन कश्मीरी पंडितों को किसने मारा? कश्मीरी पंडितों को तो कश्मीरी मुसलमानों ने मारा. यासिन मलिक कौन है? बिट्टा कराटे कौन है? जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो सारे लोग थे वो कश्मीरी मुसलमान थे. और जो हिजबुल मुजाहिदीन में है, उनका जो OGW नेटवर्क है, संस्थापक है सैयद सलाउद्दीन यूसुफ शाह, वो कौन है? वो कश्मीरी मुसलमान है. ये हमने तो नहीं कहा. These are open facts. So this, whataboutery is not going to work. I personally, even though I've been a victim of, terrorism and, from the minuscule minority, but in my journalistic career, I have been very independent and I have extensively reported on, Kashmiri Muslims who have been killed by terrorists. And, I was one of the first journalists to report on, Muhammad Ayub Pandit, who was killed and lynched by a mob outside the most famous mosque in Navata, Srinagar. And even though no local reporter was willing to confirm, I reported it first when I was working with Republic TV. And shocking images of his, bones visible, completely lynched, just because, he was from the CID of J&K police. Did one Kashmiri Muslim come forward and protest at Lal Chowk or anywhere, in Kashmir or Delhi to say that ye lynching nahi chalegi, ye hamara Muslim bhai hai, ye hamara Kashmiri hai, ye Hindustani hai? They were, at that particular time, across India, there were protests happening, not in my name. In Delhi, there was a huge protest, Jantar Mantar pe, not in my name, जिसमें भारत का नक्शा बनाया हुआ था और हर स्टेट में लिखा था कि यहाँ पर लिंचिंग हुई, यहाँ पर लिंचिंग हुई, ये हुआ, यहाँ पर बीजेपी का था, यहाँ पर आरएसएस का था, यहाँ पर बजरंग दल का था, यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का था. लेकिन कहीं पर भी उन्होंने कश्मीर पे मोहम्मद अयूब पंडित नहीं दिखाया. तो ये दोगलापन नहीं दिखाता? Doesn't this show hypocrisy of a certain ecosystem, of a certain gang of hypocrites who do not want to recognize Muslims suffering in this conflict at the hands of the Pakistani gun or the Kashmiri Muslim gun at the hands of Pakistan, and these Muslims becoming the victims. So ये तो whataboutery है. ये argument से कि ये लोग बोलते हैं, इसमें कोई आधार नहीं है, सच्चाई नहीं है. हमने तो किसी कश्मीरी मुसलमान पे बंदूक नहीं लगाई, हमने किसी को मारा नहीं, तो हम पे ये सवाल प्रश्न चिन्ह उठता ही नहीं है. तो हम सिर्फ सरकार से आज भी मांग करते हैं कि you have a commission of inquiry. आप एक कमीशन उनको 1 साल या 2 साल आप दें और वो कश्मीरी पंडितों से मिले, जो विक्टिम सामने आना चाहते हैं वो आए, चाहे वो प्रॉपर्टी के केसेस हैं, चाहे वो किलिंग्स के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, कोई भी वो सामने आए. और मैं नहीं चाहता, मतलब
victims might be a lot more, many may not be willing to come, but जितने भी सामने आए, at least commission ये तो बताए कि हुआ क्या था. A government of India constituted commission should inquire and finally conclude that was it a genocide, was it an ethnic cleansing, was it exodus. They need to finally conclude, because then we also need a closure. Aditya, are you still questioning if it was a genocide? Because, on the last show we did on this, we did like a 10 stages of genocide, and we went through every one along with the academic part as well as the experiential part. There was a Kashmiri Pandit gentleman, Mr. Raina, with us on that day. And he gave an example, real life example for every stage. So do you personally question it? I'm not. Who am I to question it? I'm the victim here. I will, of course, say that it's a genocide and ethnic cleansing and exodus, all three terms together. But the point here is that at a time when the government of India and all political parties and all advocacy groups and all individuals who are concerned should be campaigning for justice, should be saying कि time-bound inquiry होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए और truth and reconciliation के बाद rehabilitation होनी चाहिए. But we are lost in two debates today. After Kashmir files, एक डिबेट है कि क्या ये जेनोसाइड है, क्या ये एथनिक क्लिंजिंग है, क्या ये एक्सोडस है, उस पे पूरा डिबेट छिड़ा हुआ है. दूसरा डिबेट है कि क्या 200 लोग मरे थे, क्या 500 लोग मरे थे, क्या 5000 लोग मरे थे. तो क्या ये जरूरी है? क्या नंबर्स जरूरी है? क्या टर्मिनोलॉजी जरूरी है? कि जस्टिस जरूरी है और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जरूरी है? That is my point. The government of India, successive governments have completely failed. And I will openly say, Ratan Sharda ji is here. BJP has done nothing in this case. BJP might say we help people in the camps, and I salute them for that. I equally salute, others also, other political parties like, Shiv Sena, Bal Thackeray and others. I appreciate that. But when it comes to justice, हमारे को बोल दिया जाता है कि अरे आपके लिए 370 किया, आप कैसे एहसान फरामोश है. तो हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए 370 नहीं हुआ, 370 पूरे हिंदुस्तान के लिए हुआ. और हमको कोई, हमारी जिंदगी जो 370 से पहले थी वैसी ही जिंदगी 370 के बाद भी है. तो कश्मीरी पंडितों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया. Even though I was the first to really appreciate this, I was the first to also advise the government. Home Minister Amit Shah had asked me to go to Kashmir, and I prepared a report and gave it to him कि क्या-क्या चीजें करनी चाहिए. लेकिन the question is that when it comes to Kashmiri Pandits, nothing is done. I mean, this is horrific. 7 साल बीजेपी सरकार को हो गए और यासीन मलिक के खिलाफ जो केसेस हैं जम्मू के टाडा सीबीआई कोर्ट में है 32 साल से. कैन यू इमेजिन? अब यासीन मलिक की फंडिंग भी खत्म हो गई है, यासीन मलिक का जेकेएलएफ बैंड है, यासीन मलिक 2019 से जेल में है, लेकिन तब भी स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा. Now who is stopping? Are there some elements within the system who do not want Yasin Malik convicted? So और उसने कश्मीरी पंडितों को सिर्फ नहीं मारा, उसने कश्मीरी मुसलमान महिलाओं को मारा है, उसने इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों को मारा है. तो आप हमारे लिए नहीं, इंडियन एयरफोर्स के जवानों के लिए तो करिए. उनकी जो वाइफ है निर्मल खन्ना, शालिनी खन्ना, वो जम्मू में 32 साल फोटो लिए और वो ब्रीफकेस लिए, उस पे गोली के निशान अभी भी हैं, वो लेके घूम रही हैं कि न्याय मुझे मिलेगा, कोई मेरी सच्चाई बताएगा. और आज 32 साल बाद पहली बार कश्मीर फाइल्स में वो सीन आया है कि कैसे स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारा गया. सो माय अपील टू प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ओनली इज दैट इफ यू अगेन एंड अगेन से कि रिहैबिलिटेशन हम करेंगे, हाउसिंग स्कीम लाएंगे, पीएम पैकेज होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला. आई कैन राइट इट ऑन माई ब्लड. तो रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित अभी इमीडिएटली नहीं होने वाला. यू विल हैव टू क्रिएट स्टेजेस. First there needs to be justice. That will be the biggest confidence building measure. Ki Yasin Malik and Bitta Karate are seen as the faces of terrorism, faces of genocide of Kashmiri Pandits. If you convict them, if you send them to gallows, that will send out a message and some kind of a relief and satisfaction and closure also for the Kashmiri Pandits. And that justice will lead to truth and reconciliation. क्योंकि अभी 32 साल तो acknowledgement पे ही काम चल रहा था. लोग जगमोहन को बोल रहे थे कि भाई जगमोहन ने किया, लोग आरएसएस बीजेपी को गालियां दे रहे थे, हम लोगों को जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता नहीं है, हमको संगी बोला जा रहा था क्योंकि हम वी वर डिमांडिंग जस्टिस. सो दैट ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन पोस्ट जस्टिस विल फाइनली लीड समडे टू रिहैबिलिटेशन. अभी रिहैबिलिटेशन नहीं होने वाली. मैं अभी भी कश्मीर जाता हूं तो मुझे डर लगता है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई डू नॉट फील सेफ. इवन मेरे तो चलो छोड़ दीजिए, मुझे पुलिस वाले वहां पर बोलते हैं कि भाई आपको सिक्योरिटी साथ रखनी चाहिए. आप अगर कश्मीर आते हैं, यू आर अ टारगेट एंड यू वेरी वॉसिफोरस अगेंस्ट टेररिस्ट, सो यू शुड कैरी सिक्योरिटी. आप वहां पर भूल जाइए. मेरे को दिल्ली में भी सिक्योरिटी मिली है जस्ट बिकॉज आई गॉट एन ईमेल अ फ्यू मंथ्स बैक
saying that कि भाई आपका सर हम काट देंगे. So ये तो स्थिति है. और जितना हम ज्यादा aggressively बोलते हैं, जितना ये होता है, तो और consequences बढ़ जाते हैं. So I think there has been, ad nauseum so much of debate on this Kashmiri Pandit issue, and I'm glad. I thank Vivek Agnihotri, Pallavi Joshi, and Anupam Kher, who dared to make such a brave film, because we are seeing the kind of hate that they're facing, the kind of lobby. You saw that Wire article today, which talked about this film is laughable. They're calling the genocide of Kashmiri Pandits laughable. This is the mindset. This is the hate factory. See, that this is running. also what I don't understand, and this is come to light. Advaita, I'll just like to add to what Aditya has said, and I would like to assure with my whatever experience I have with BJP and the government. I don't have much experience, but as an observer, I can say things are changing. Definitely, there will be justice. Definitely, Pitta Karate and people like Yasin Malik will face the music. If not later, sooner, I would say, than later. And when talk of Musliman भी मरे थे, let me remind them, मुसलमान जो मरे थे इसलिए मरे थे कि वो उनके सो कॉल्ड प्योर इस्लामिक लॉ को नहीं मानते थे. वो कश्मीरी हिंदुओं के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े थे, इसलिए वो मरे. जबकि हिंदू इसलिए मरा क्योंकि वो हिंदू था. तो देयर इज डिफरेंस. तो अगर आप हिंदू होने के कारण मारते हो और इसलिए मारते हो कि वो आदमी इस्लामिक नहीं है इनफ फॉर देयर गुड, देन डोंट टेल मी हिंदू मुसलमान इक्वली मरे थे. पंजाब के अंदर आपको आश्चर्य होगा 60% जो मरे थे वो सिख थे खालिस्तान पीरियड में. इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि खालिस्तानी डिमांड जो थी वो जस्ट थी, उन्होंने अत्याचार नहीं किए वगैरह वगैरह. मिलिटेंसी टेररिज्म अपनी जगह है. कौन मरा कौन नहीं मरा ये इश्यू है कि जो टेररिस्ट है वो किसको अपना साथी मानते हैं किसको नहीं मानते. तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू दोस कश्मीरी मुस्लिम्स हु रिफ्यूज टू बॉव डाउन, टू बी काउ डाउन, एंड आल्सो टू हिंदूज हु स्टक देयर डिस्पाइट नोइंग कि दिन अच्छे नहीं है. Things were going wrong right from 1975 when this Islamization began. By 86, situation was very bad. I've got incidents noted in my book जहां पर हिंदू पड़ोसी जो उनके मुसलमान थे उन्होंने अत्याचार किए, उनके साथ में बच्चे उनके जो कहते हैं हमको ये बट्टे के साथ नहीं खेलना, ये वहां की लैंग्वेज हो चुकी थी, उसके बावजूद वहां रहे. उनको भरोसा था कि हमारी सरकार है, हमारा देश है. लेकिन जो हुआ वो अक्षम्य है, उसके बारे में कोई भी किसी तरह की बहस कर नहीं सकता. तो इस तरह की बहस करना बेकार है. अगर हम ये मान लेते जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव सेक्युलर भी है ये गलत हुआ. आपको पता है इंटरलोक्यूटर टीम बनी थी यूपीए गवर्नमेंट की जिसकी रिपोर्ट फेंक दी गई. क्या वो कश्मीरी हिंदुओं को मिले थे? आदित्य सामने बैठे हैं, पूछे उनको. आपने इंटरलोक्यूटर टीम बना दी, किसको मिलते हैं? वही सेपरेटिस्ट लोगों को, वही वैली के पॉलिटिशियंस को. एक बार लद्दाख वालों को मिलते हैं, 5 मिनट जम्मू वालों को मिलते हैं, कश्मीरी हिंदू को मिलते ही नहीं. तो कौन सा आप इंटरलोक्यूशन करोगे? कौन सा आप कश्मीर चाहते हो? कौन से कश्मीर के पास को आप भूलना चाहते हो? ऐसे लोग अगर चाहते हैं कि कश्मीर नॉर्मल सी होगी तो हो ही नहीं सकती थी. दिस इज द सिचुएशन अंडर विच द एंटायर जम्मू कश्मीर strange episode of the Indian history was played. Aditya, I was surprised also to see it's almost like there's a monopoly on victimhood, isn't there? They like Kashmiri Pandits, because they're educated, because they've built their lives having no option outside of their homeland, then they are not victims. Never mind the thousands are still in the camps. But the real victims are the victims who have this sort of, the Rana Ayub speaking up for their men and calling all of this like hate propaganda. How is this hate? If it's hate is what was done. So monopoly on genocide as well. Rana Ayub's tweet that when a genocide is happening right now, how can you, distract attention towards through these films? Now the reality is out in open. The film is out there for people to see, and sensible people will research. Sensible people will speak to Kashmiri Pandits, the primary victims, and then take a call. I'm not asking you to blindly believe the film, but the film for the first time is giving the Kashmiri Pandit, the Kashmiri Hindu perspective of what really happened in the last 32 years and the events that led to the 1990. And I openly ask, the Home Minister of India at that time was Mufti Mohammad Saeed. The Chief Minister of Jammu and Kashmir was Farooq Abdullah. What was their role? Why should that not be, probed? And मुझे तो तरस आता है उमर अब्दुल्ला पे,
उमर अब्दुल्ला ने अभी स्टेटमेंट दिया कि मुझे समझ नहीं आ रहा, इज दिस अ डॉक्यूमेंट्री, इज दिस अ फिल्म, इज दिस सिनेमा, ये किया क्या है इन लोगों ने। ही इज इग्नोरेंट, उसको समझ नहीं आया उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि 30 साल से तो सिनेमा हॉल कश्मीर में है ही नहीं। फॉर 30 years the Islamists have banned cinema halls. वहां पर आर्ट, सिनेमा, लिबरल आर्ट्स, म्यूजिक कोई भी करता है तो उसको टारगेट किया जाता है। ये तो 10 साल बाहर पहले, जाके देखते हैं ना आदित्य, उमर नहीं अब्दुल्ला, वही मैं कह फारूक रहा हूँ, मैं अब्दुल्ला तो वही कह रहा लंदन के हूँ, क्लब्स में जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि तो 10 साल पहले एक ऑल गर्ल्स बैंड आया वहां पर, बहुत चर्चा हुई उसकी, उनको बैन कर दिया गया, उनको टारगेट किया गया। जायरा वसीम के साथ क्या हुआ? जायरा वसीम तो इतनी उभर के कलाकार आ रही थी आमिर खान के साथ और बाकियों के साथ, उसको भी टारगेट किया गया। उसके बाद आप उमर अब्दुल्ला की हिपोक्रेसी देखिए। उसके बच्चे यहाँ दिल्ली में, गुड़गांव में कहीं कैफे भी गए, पब भी गए, किसी सिनेमा हॉल में भी गए, कहीं भी ओपनली मॉल्स में भी गए, लेकिन जब कश्मीरी वहां पर चाहता है कि सिनेमा हॉल हो, वो कश्मीर फाइल्स देखे या कहीं भी जाए, तो उसके लिए बैन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कितनी बार ही आई पिछले 30 साल में? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर कितनी बार बने? उमर अब्दुल्ला सेंटर में भी थे, लेकिन क्या एक बार भी उन्होंने आवाज उठाई, विद्रोह किया कि नहीं हम नहीं ये मानेंगे, सिनेमा हॉल होने चाहिए? कभी नहीं किया। तो बेचारे उमर अब्दुल्ला को कहाँ पता होगा कि सिनेमा क्या है या डॉक्यूमेंट्री क्या है, वो तो इस मामले में अनपढ़ है पूरे। सो आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट हिपोक्रेसी of the regional politicians there in Kashmir, and they have been fooling the public. वो कश्मीरियों को बेवकूफ बना रहे थे और अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी ओपनली बेवकूफ भी बन रहे थे। ये 370 के बाद ही कश्मीरियों में भी विद्रोह आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ। आप देखिए कितने साल, कितने दिन और महीने ये लोग जेल में थे, मतलब एक ओपन घर पे प्रिजन में थे, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी काडर आया या कश्मीरी आए जिनने प्रदर्शन किया या प्रोटेस्ट किया? Nobody came, and I was there. I spent considerable time after 370 in Kashmir, और मैं लोगों से मिलता था, तो एक बात तो कॉमन थ्रेड था ऑल अक्रॉस कि इनको छोड़ना नहीं, इनको जेल में ही रखना। उमर को भी, They're फारूक को not भी। popular. That's what Yeah, people in India don't understand. I mean, yeah, India, matlab, They are always having security guards with them. They can't exactly, move without security guards. exactly. Even terrorist leaders. तो गुपकार रोड पे जो इनके घर हैं वहां से इनको निकाल देना चाहिए, इनको बिल्कुल। अपने ये करें जहां रहें, और ऑडिट कराना चाहिए कि ये 30 साल से जो इनकी कमाई हुई है ये कहाँ से हुई है। इनका कोई बिजनेस हाउस तो है नहीं, ये कहीं कोई कमाई तो ऐसे करते नहीं, तो ये पैसे कहाँ से आए? ये दिस शुड बी प्रूव्ड। एंड ऑफ कोर्स एज आई सेड बिफोर, द रोल ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड द पीपल इन द पास्ट, इट ओनली एंडेड परहैप्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी केम। उसमें भी समय लगा, मुझे लगता है 2017-2018 में फाइनली खत्म हुआ। तो ये who are those people, the former IB chiefs or senior officers who were involved in recruiting Yasin Malik or even other separatists, providing them not just medical aid or flight tickets or other luxuries, but money every month, a certain amount of money. So this is shocking. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप मुझे झूठा कह सकते हैं, इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ जो करगिल युद्ध में बीपी मलिक साहब थे, उन्होंने मेरे ट्वीट पर रिस्पॉन्ड करते हुए लिखा है कि आई सॉ द फिल्म, आई लव्ड इट, बट वन थिंग वाज मिसिंग, दोस पीपल वर नॉट एक्सपोज्ड हु पेड मनी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू यासीन मलिक, और ही वाज अ डबल एजेंट, ही वाज प्लेइंग अ डबल गेम, and he was taking India for a ride, and we perhaps were just swinging along. So this is the whole problem, कि ये जेनोसाइड और ये सब जो आप राणा अयूब और ये अरुंधति रॉय और निवेदिता मेनन का पूरा सर्किट है, ये पहली बार तिलमिलाया हुआ है। ये पहली बार इनको शॉक लगा है, कि पहले तो शॉक लगा कि 370 हट गया तो समझ नहीं आया क्या करें। उसके बाद अब जब ये कश्मीर फाइल बनी, so they are saying that no, these are blatant lies, this is propaganda, this is Modi's way of dividing the communities, and perhaps he will use this for 2024. I don't know. Advaita, I have done research on Kashmir since 2003-2004. I have been speaking, I have been writing, I have been debating on TV. I can tell you real stories are much more horrible than what the Kashmir file shows. You can ask any Kashmiri Hindu. I talked about Girija Tikku's brother who talked to me just 2 days back, and he said we can't come out of the trauma that such thing happened. And the kind of cruelty that was done to these people, it is indescribable. It is like animal behavior. And you are saying that Kashmir file is cruel. Kashmir file is kind to these people who have done worse to Kashmiri Hindus and local Muslims who are against them.
And let us not even talk about that, because if every file opens, every case is discussed. See, what you see is too stunning. So even I was shocked, though I have read about it, met people. But what comes on screen is it really hits you hard like a punch, and you simply break down. I broke down the movie at least 3 times. So having understood, I think the movie has done come out on the open what people only had heard, or 90% people did not even hear about that. A young Maharashtrian boy told me, "Sir, I was born in 1992. Why I don't know anything about this particular episode in history? Why it was never told to us in the schools?" This is the agony of average Indian. This has to be understood. People are trying to trivialize I it, was in are school. playing those emotions of Yeah. Indians. I was in school. There was no big buzz about it while it was happening also. I mean, there was no big coverage or anything. And if That you look at the movie reaction, if you had seen the reaction actually in the theaters, the anger is not against Muslims. It may be some stray case. This is against the rulers, it is against politicians, it is against terrorists, it is against extreme radical elements. It is not at all against Muslims. That is the Indian society's nature. If we Hmm. can't appreciate it, we want people to get provoked and get violent the way it has been tried in UP or some other place, then these leftists are making a huge mistake. They want chaos in the society. It's but the good nature of Kashmir in the Indian society, the Hindus that we see, they are targeting the right people who actually did injustice to Kashmiri Hindus, and the way the violence was perpetrated on them, and they should be thankful for that. So Hmm. let us not try to demonize either the movie or the people. I would say just read some episodes that come on the WhatsApp by people who personally suffered that, and Hmm. then try to trivialize it. Yeah. No Indian should dare trivialize. In Europe, if you talk against Holocaust, you can be arrested. Hmm. If you say it's false, you can be arrested. Here we So are. I'm Every evidence shocked at against it, some of and the we are comments. trivializing it. I'm shocked at some of the comments. Like, even if one of those stories is real, it's enough, right? And I don't understand. I was talking to Rajendra Rainath ji, Aditya, my last question really for you is, and he said that he, of course, spent 25 years of his life in Kashmir and then left in 1990, like so many others did. And there were, of course, people he went to school with, to college with. And of course, there's that whole aspect that people that you went to school and college with kind of pointed out the homes and betrayed. It was a very personal and a deep betrayal. So there was that. But he said in the last 30 years, what has happened is over time, the school groups, the WhatsApp group has started, the college group has started, and we've been chatting, and we necessarily don't talk about politics or anything touchy, but we'll talk about catch up on each other's lives and all of that. And it's an active group. But he says after this film came out, there was complete silence in that group. And of course, it's a lot of Kashmiri Muslim classmates, things like that. And he said there was a part of me that was hoping that when this comes out and it is shown on screen and it becomes, clear what we experienced as a community, I'll hear something from them. Someone will pick up the phone or someone will turn around and say, God, this was awful. Even if they're not, we were scared then, we couldn't speak up then, but now, 30 years later, we can speak up. And this is terrible what happened. And he says, nobody's done that as yet. And he's like, I'm still hoping that someone will. Advaita, some people are asking that you are trying to give clean chit to Muslims in Kashmir Valley. Not at all. Achha. We are saying time and again that there were some Muslims who were brave enough to die for the cause of unity and peace, but the people who were betrayed were done by the neighbors. You hear most of the stories which tell you that neighbors did them in. So are we trying to say that everybody is bad? No, but it is also true that what happened had local support, no doubt about it. But even now, after a generation or more than nearly 2 generations, if people own up, if even a minority owns up, things will slowly change. I have seen such people, met such people. I am not saying everybody is comfortable, but surely they need to right from top to the local people have to admit that something went totally wrong and they were silent spectators. In fact, some of them were cooperative with these people, including the top leaders of Valley, who actually played along with the terrorists. They passed on, they gave them the best of the privileges. They gave them all the support. Those who came in power, they became supporters of Constitution and India.
Those who lost power went against India, went with Pakistan. This was a game played for last 70 years. So things are changing, definitely. At the same time, as everybody says, inquiry commission has to be set up. If courts don't listen, it has to be time bound, and people should feel there is a closure. There is no second way about it. Yeah, yeah. Aditya, yes. Coming back to you. Yeah. Yeah, I mean, there has been a lot that has happened. In fact, the silence that you talk about is very much visible. I mean, I have been part of a few groups as well, and there is not just silence, but unfortunately, there are some who I really had a lot of hope in. And unfortunately, those people are also saying that these are lies and, we will not believe in this. So, which is unfortunate. But, positive aspect is that, my father, who actually, does not come on television very often. Yesterday, he was with Arnab. But when he was on Arnab's show, his classmates from Kashmir, after 40 years, called him and he recognized their voice. So this also is another, they did not talk about the film, certainly, but this, of course, was a warm gesture, and, they welcomed him and said that whenever you come to Kashmir, you stay with us. So nobody's denying that. Nobody's denying that. But the question is, and I know many liberal, Kashmiri Muslims, I have great friends there. I go to their houses whenever I go to Kashmir, I eat with them, we have fun chats, etc. And they condemn terrorism openly. There's a great, many people who do that. But unfortunately, till the time, the entire community as a whole, their organizations, their political parties, their advocacy groups, their even religious groups take a call and unitedly say that this was wrong. There was participation from us. We were part of it. Just like, many of you might have seen that video of Javed Beg from Badgam in Central Kashmir, who openly says that Kashmiri Muslimano ko aaj to zamir dikhana padega और बोलना पड़ेगा कि हमसे गलती हुई है, हमने ये किया है और ये जेनोसाइड एथनिक क्लिंजिंग था, और अब जब ये हुआ है हमको इसको कैसे रिवर्स करना है, उस पर हमें काम करना पड़ेगा. तो जब तक ऐसी वॉइसेस और ज्यादा नहीं आएंगी तब तक ये नहीं होगा. मुझे Advaita, very strangely, 10 years ago, I remember, I think 10 or 12, 13 years back, Omar Abdullah was speaking at an event in Delhi organized by Tehelka, one of the conclaves here, I think in Jamia or elsewhere, where he said that, I apologize to the Kashmiri Pandit community. And he advocated that there should be a Truth and Reconciliation Commission. So I was the first person. He also perhaps wrote a blog or some article about it. And I welcomed it. I said, this is a welcome change. Perhaps he's educated and he sees reason and he believes that this should happen on the lines of what happened in South Africa. But imagine what the man says now. So staying in Kashmir perhaps, or, being close to his father, he has the same tone and tenacity. Politics and radicalization also, he might be educated, but I do not see him as a person of reason anymore. There is radicalization. There is radicalization in people who stay at Gupka Road also. Thank you, Aditya, as always. Radicalization, Aditya, is only because they are losing power. As I said, they are not radicals when they are in power openly, I mean. And once they lose power, they become radicals. They become pro-Pakistani. They will behave in such irrational manner, if you pointed out. But I think they have lost power forever. As far as I can think of, whether elections take place or not, that is not important. Important is that peace should come. People should get justice. I don't mind if elections don't place for another 5 years. What is there in elections? If Sheikh Abdullah, manipulated the elections for first election itself, and everybody agrees except Vajpayee's time, every election was rigged, then where are we going to get justice on these people who played along for so long with these people? Very true. It's all internally, they are the same. But isn't it also political currency encouraging this kind of, you encourage this kind of separateness and you get taken more seriously in Delhi? Advaita, that's the trade-off, right? As a journalist, if you ask me, I'll say that, electoral democracy is very important. Yeah. And I gave this perspective to the government and, when I met the LG also, that as a journalist, I would feel that, yes, immediately electoral democracy needs to be restored. Now, enough is enough. Ye hona chahiye. But as a Kashmir watcher and as a Kashmiri, who has seen all this, who knows the intricate details of what's happening behind closed doors also there, I would say at least for the next 3 years more, there shouldn't be any elections and the governor's rule should continue. And perhaps we should continue with the current governor, Manoj Sinha, because, he understands bureaucracy. He's a very, honest image
and he knows how to handle them. So perhaps it should continue, but we'll know only after the delimitation happens, in May, because there are two sections, two viewpoints within the government also. One believes that by the end of the year, election should happen. Other believes, like me, that at least for some time, till the system is changed, till action is taken, and a different system is place of democracy, till that time, election should not happen. So let's wait and watch how things unfold. And let's hope that there is a local young polity that rises in Kashmir, because I think the old dynastic parties have been taking, I think, Delhi and Kashmiris for a ride. So Absolutely. let's just hope that there's a churn in the political system there as well. Thank you so much, Aditya. Again, I think what you ask for is entirely legitimate. And I think it's urgent, because that generation that witnessed it in its entirety and had the full experience of this is also aging now. It's been 32 years. So it's very important that, memories are intact, that people are there who can, attest to what happened in those horrific times. So I hope that your call and your community's call is heeded. Thank you, Ratan Sharda ji, as always, for joining us. And thank you all of you for watching. And we shall be back next week. Thank you so much. Jai Hind. Jai Hind. Bye. Bye-bye. Aditya.